So maybe 10 years or 15 years back when I have started, and at that time it was a quality control, QC. It was known as a quality control. The role of quality control at that time was just to find out abnormalities. So finding out the abnormalities. Abnormalities are defective parts. So 100 parts been produced, so they will inspect the parts and they will segregate okay parts and not okay parts. They will segregate them. Okay parts will be dispatched to the customer, and whatever non-okay parts are there, defective parts are there, abnormalities are there, those parts they will put with a red dot. It is we call it as a rejection. So the role of that type quality, that is quality control, was to segregate the okay parts and not okay parts, just like what we are talking yesterday on sorting. They are just doing a activity of sorting. So what activity of sorting is doing is to segregate the okay parts and not okay parts. But with the time goes and customer are more aggressive on quality, they want more better and better quality, they want good results in terms of quality, they want better functions in the product, and all these things has changed the scenario of quality. And now today we are not going for QC, but we are going for a QA. What is QA? QA is nothing but quality assurance. What means by quality assurance is to ensure that whatever product is being produced, it should be a quality product. Whatever we produce, it should be a quality product. So each and every product which you produce should have quality inbuilt. So we can say quality is produced first. What we say quality is produced first, then inspected. This is another slogan. I think we have not seen that slogan in my slide, but this is another slogan, that quality is produced first and then inspected. पहले क्वालिटी जनरेट करती होती है, बाद में उसको इंस्पेक्शन होता है. So what is quality control? Quality control is nothing but a sorting of okay and not okay qualities, parts, that is abnormalities, and segregate it. Quality assurance is nothing but it is a process, it is a thing which allows you to make first time right product. First time right is very important. कि आप first time right development में हम बात करते हैं कि first time right development should be first time right product. So similarly quality should be first time right. So making that is a quality assurance. And what is process audit? Process audit helps us in finding out the abnormalities, the shortcuts, or the deviations which the production team or anybody taking in the process, the defined process and the actual process, the deviation in that can be find out during our process audit. So that is why the process audit is important. Now let us go into the detail what quality control actually does. Quality control actually does a role of detection. What they does? They does a role of detection, detecting the okay and non-okay casting, detecting the not okay casting from the okay casting. And what quality assurance did? It does a role of prevention. What it means? Prevention is not allowing to make wrong parts, not allowing to make defective parts. That is the role of quality assurance, is nothing but so we go to next slide. As already we seen, input, process, output. We have an input, we have raw materials like steel scrap, alloys, and other things. That should be inward inspection. What is inward inspection? Inward inspection is nothing but a prevention. If you give a right kind of input, we can able to make a good output. It is always say to change output, you have to change input or process. अगर आपको कोई output change करना है, आपको the output is not happy, you are not happy with your output and you want to change your output, then you have to work on your input or your process. तो यहाँ पर अगर हमें आउटपुट अच्छा चाहिए तो हमें क्या चाहिए? योर इनपुट शुड बी गुड. एंड व्हाट इनवर्ड इंस्पेक्शन डज? दे प्रोवाइड्स यस अ गुड इनपुट. जो भी हम कंट्रोल प्लान बनाते हैं इनवर्ड इंस्पेक्शन का, उसके ऊपर वो काम करते हैं और जो स्पेसिफिकेशंस है उसके तहत ही
जो अच्छा मटेरियल है, जो हमारे स्पेसिफिकेशन में आता है, वही मटेरियल आगे प्रोसेसिंग को देते हैं. सो इनवर्ड इंस्पेक्शन हेल्प अस इन improve our quality. It helps in avoiding the defects. What is process? Process is nothing but the processing which done on the inward material. और ये जो प्रोसेसिंग है उसमें क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल होता है. जो भी पैरामीटर्स हमने दिए हैं, जो भी सिस्टम हमने डिफाइन किए हैं, जो भी अलग अलग मेथड्स हमने दिए हैं, दे हैव टू फॉलो दैट method, they have to follow that instruction, they have to follow that process, and that process control should be audited. It should be audited for finding the abnormalities, finding the some of the deviations, see that there is nothing going wrong in the process. कई बार होता है कि रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग नहीं है, लोग स्किलफुल नहीं है, कई तरह की चीज़ें हो सकती है. सो दैट हैज़ टू बी understand, that has to be recollected by using process audit. And then final is a product audit. Product audit मतलब जो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, whether that are meet or not, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट ऑडिट करके कास्टिंग को हम रिलीज करते हैं कस्टमर को डिस्पैच करने के लिए. So the role of inward inspection and in process inspection is nothing but a QA, that is quality assurance. Quality assurance helps in prevention, whereas QC, quality control, helps in detection. Further we will see that in detail. I am just repeating it again and again so that it will very much clear to you. First is quality control. So it controls outgoing quality as per customer requirements. Quality control is nothing but they control the outgoing quality. So you say whether quality control is required or not. If it is doing a detection job, whether it is detection job means it is non-value added activity. So whether it is required. So non-value added activity we want to eliminate, we want to reduce. So whether it is required. Yes, it is required because we don't want any defective part, any wrong part go to our customer. अगर कस्टमर के पास कोई खराब मटेरियल जाएगा, so we will have a bad effect on our business. Customer will be unhappy or we don't want to happen. That is why quality control, though it is non-value activity, though it is detection activity, we have to carry that in our organization. Only thing what we can do, we can improve our quality awareness, we can improve our quality assurance practices, and slowly we can reduce the activity of QC. अगर आप कोई आउटपुट में आपके 100 पार्ट्स आते हैं and you are finding that 50 parts are not okay or 50 parts are rework, then it is very difficult for you. तो आप क्वांटिटी कंट्रोल बंद करके चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिकॉज यू हैव टू फोकस मोर ऑन क्वालिटी कंट्रोल. क्योंकि 100 में से 50 पार्ट्स है, तो 50 ओके पार्ट्स में और एक 10 पार्ट ऐसे होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, जो शायद कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करने वाला है. सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन क्वालिटी कंट्रोल. लेकिन जैसे जैसे आप क्वालिटी एश्योरेंस बढ़ाएंगे, फर्स्ट टाइम राइट कंसेप्ट लाएंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, आपकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, क्या हो जाएगा? 100 में से आपको 2 या 3 ही पार्ट डिफेक्टिव मिलेंगे. देन योर फोकस विल शिफ्ट फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल टू क्वालिटी एश्योरेंस. तो आप क्वालिटी कंट्रोल को वहाँ पर थोड़ा सा कम कर सकते हो. अगर पहले 50 रॉन्ग पार्ट चेक करने के लिए आपको 5 इंस्पेक्टर लगते थे, तो अभी अगर 2 या 3 ही पार्ट आते हैं, तो यू कैन रिड्यूस दैट नंबर्स टू 1 और 2. सो योर फोकस और योर प्रेशर विल ऑन क्वालिटी कंट्रोल विल रिड्यूस एंड यू कैन फोकस मोर ऑन क्वालिटी एश्योरेंस. सो ये धीरे धीरे आपको चेंज ओवर करना होगा क्वालिटी कंट्रोल से क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर. एकदम से अगर आप करने जाएंगे तो यू विल फेल इन प्रॉब्लम कि आपके यहाँ से काफ़ी सारा खराब मटेरियल कस्टमर के पास जा सकता है. सो यू वांट टू अवॉइड इट. सो व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? इट कंट्रोल्स आउटगोइंग क्वालिटी एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. इट इज सॉर्टिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी. इट इज नथिंग बट अ पोस्टमार्टम. It is nothing but a postmortem because you have already produced the casting, you have already produced the part, and now the person is just checking whether it is okay or not okay. He cannot able to add any value to that product. He is just doing a non-value added activity. So he is doing a postmortem. Inspection is non-value added activity. Customer is non-paying us for the inspection. It can only add to your cost as inspection cost, rework cost, or cost of reaction. So quality control is always a activity which is non-value added activity and will add to your cost. So it is better to reduce. This is very old style of quality function which ensures that quality is inspected and okay parts are passed to the customer.
Inspection is major part of this system and was involved 100% inspection before dispatch, because we don't want any defective part pass on to your customer. That is very important. QC quality control is basically a post-mortem activity. जैसे मैंने पहले बताया कि it is a post-mortem activity, but it helps in arresting wrong parts or non-conforming parts going away to customer. This is very important that we are arresting non-okay parts going to the customer. Now we go to quality assurance. What is quality assurance? This is a newly defined concept. मैं जैसे बताया कि पिछले 10 सालों में ये concept का जन्म हुआ है भारत में, and now we are working on same concept. Quality assurance के ऊपर ही हम ज़्यादा काम करते हैं, उसके ऊपर ही हमारा ज़्यादा दारोमदार रहता है. So quality assurance is a quality function. This is a now popular and used both in most of the industries. Here everyone is the organization is responsible for the overall quality culture in the organization. So very important is everybody in the organization is responsible for the quality. नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी रिजेक्शंस की बात होती है, जब भी कस्टमर कंप्लेंट्स की बात होती है, वी पुट ऑन आवर फिंगर्स ऑन द क्वालिटी डिपार्टमेंट, वी पुट ऑन आवर फिंगर्स टू द क्वालिटी मैनेजर, बट ही इज जस्ट अ पर्सन हु टैकल्स द हैंडल्स द होल थिंग्स. The responsibility, actual responsibility goes to the production team also, because they are the creator of that problem. The problem starts in the production itself. वहाँ पर कुछ ना कुछ गलती की है, वहाँ कुछ ना कुछ प्रोसेस सही नहीं हुए, इसीलिए वो डिफेक्टिव पार्ट जनरेट हुआ है. सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्शन, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी, बिकॉज दे आर नॉट able to build up a process which can produce a defect-free casting. So it's a responsibility of overall organization. So we are not allowed to put our finger on any single person. It is a responsibility of all organization, everybody in the organization. So that is why it is called as teamwork. The organization is responsible for overall quality culture in the organization. Inspection is non-value added activity. हम बार बार उसको दोहरा रहे हैं. Hence try to minimize the inspection as far as possible. जैसे हमने कल बताया, inspection is non-value added activity, we have to reduce it. Quality is everyone's responsibility. जैसे हमने बताया, it is a responsibility of everyone in the organization, right from your operator to your top management, your boss, your MD. Everybody is responsible for the quality in some of the other way. They had to perform, they had to ensure that whatever responsibilities are on their shoulder, they had to perform to get a right quality. Quality assurance helps in producing defect-free parts right at first time. It is a preventive measure. This is very important that it is a preventive measure and it helps in producing defect-free parts right at first time. इसका मतलब है हम इस तरह की प्रोसेस डिजाइन करें. सो प्रोसेस डिजाइन इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. वी कैन से व्हेन अ न्यू पार्ट कम्स, कोई नया कास्टिंग आता है, सो हाउ इट शुड वी शुड डिजाइन अ प्रोसेस फॉर इट. What should the methoding, what should be pouring time, what should be pouring temperature, what should be chemistry, whether we should give sleeve, how many ingots should be given, what sand properties will keep, how should be core design, how should be core properties should be maintained, what are the sand properties to be maintained, all these things, pouring temperature, knockout time, all these are the process parameters which are to be designed. And that is called as a process design. That the process design is the responsibility of quality assurance team. It doesn't mean only quality is involved. The quality person, production person, marketing person, your development person, your pattern shop person, your marketing person, everybody should come together and form a team under quality assurance and develop a process which will help you in producing defect-free parts right at first time. So it is a preventive measure. It will help you to prevent the defect so that your quality control job will get reduced, your inspection job will get reduced, your non-value addition will come down, and definitely it will help you in improving your cost competitiveness. So quality assurance, he is not only responsible for inspection activity, but he is equally involved in the design and implementation of process.
process of producing right first time casting. He is also responsible and involved in various trainings in the organization for increasing quality awareness among the employees. This is very, very important. There are many trainings required. How to utilize your resources, how to use various equipments, how to check the temperature, how we can handle the situation. A lot of trainings are required. The skills of various operators are to be improved, and that responsibility is again goes to quality assurance department. I am just again repeating, it is not a single person's responsibility. Quality assurance should be a team of a people with CFT, team of people with teamwork, where the production team guy will be there, quality guy will be there, production guy will be there, pattern shop, development, marketing, everybody will be there. They are sharing their experience, they are sharing their knowledge, they are sharing their inputs to get right first time parts with prevention. So that is very important, to train your team of people to get them more aware about quality awareness. Quality assurance, it involves the process design. It works as a preventive measure. Process design works as a preventive measure. We must understand customer specific requirements. Once again that point comes, we must understand the customer specific requirements. While going for the right process or right process parameters, we must understand what is customer wants. जैसे मैंने आपको बताया, आपको नेस कॉपी चाहिए, so you have to, your input should be नेस कॉपी. आपको cold copy चाहिए, so your input should be something different. Your input should be ice. So that is very important to understand the customer specific requirements before we follow the process design, before we go for the process design. This is very important. And design our process such that it will meet customer requirements. कस्टमर की रिक्वायरमेंट तभी मीट होगी जब हम उसे पहले सही तरीके से समझ लें, और वो समझ के उसके हिसाब से हम अपना प्रोसेस डिज़ाइन करें, और तभी जाके हम कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट फाइनल प्रोसेस एंड वैलिडेट इट पीरियडिकली. जब भी हम फाइनल प्रोसेस प्लान करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, ट्रायल्स लेंगे, ट्रायल्स के बाद हम उसके रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे, और जब वेरीफाई हो जाएगा तो बाद में उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर वैलिडेट करती जाएगी कि वेदर द सेम प्रोसेस इज फॉलोड एंड द रिजल्ट्स आर एज पर आवर विश. जैसे कि हमने बताया था कि मुझे हार्डनेस चाहिए 180 230, इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे मैंगनीज 0.4 रखना है. तो वेदर आई एम पुटिंग मैंगनीज 0.4, येस आई एम पुटिंग इट, एंड वेदर हार्डनेस इज गेटिंग इन द रेंज. उसके साथ में उसका मैट्रिक्स मुझे 50% पर लाइट चाहिए, वेदर आई एम गेटिंग 50% पर लाइट, वेदर आई एम गेटिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज एज पर विश. तो ये सारी चीज़ें हमें पीरियडिकली वैलिडेट करना जरूरी है. सो डिफरेंस बिटवीन QC एंड QA. क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इज नथिंग बट QA इज प्रोसेस ओरिएंटेड, QC इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड. QC में हम क्या देखते हैं? हम प्रोडक्ट देखते हैं, हम प्रोसेस नहीं देखते हैं. जो कास्टिंग रिजेक्ट है नहीं रिजेक्ट है, इट इज़ अ पोस्टमार्टम थिंग. हम सिर्फ कास्टिंग देखते हैं, उसका प्रोसेस नहीं देखते हैं. लेकिन QA में वी फोकस ऑन द प्रोसेस. सो बिफोर पोरिंग द कास्टिंग वी फोकस ऑन द प्रोसेस ऑन बेसिस ऑफ विच दैट कास्टिंग विल गेट प्रोड्यूस. तो हम प्रोसेस के ऊपर प्रोसेस ओरिएंटेड काम करते हैं. जैसे ISO बोलता है हमें कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड काम मत करो, प्रोसेस ओरिएंटेड करो, मैन ओरिएंटेड मत करो, प्रोसेस ओरिएंटेड करो. उसी तरह यहाँ पर हम प्रोसेस ओरिएंटेड काम करते हैं, जिसके वजह से रिजल्ट्स आर फार बेटर. सो टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट ऑडिट इज रिलेटेड टू QC. QC में क्या क्या आता है? प्रोडक्ट ऑडिट होता है, इंस्पेक्शन, जो भी इंस्पेक्शन थिंग्स आर देयर, एंड प्रोडक्ट ऑडिट इज रिलेटेड टू QC. QA में क्या आएगा? प्रोसेस डिज़ाइन आएगा और प्रोसेस ऑडिट आएगा, जो आपको मदद करता है कि वेदर थिंग्स आर हैपनिंग एज पर योर प्लान, वेदर थिंग्स आर गोइंग एज पर योर विश. वाइल प्रोसेस ऑडिट इज रिलेटेड टू QA. QC मेक्स श्योर रॉन्ग पार्ट्स आर नॉट गोज फ्रॉम योर कंपनी. आपकी कंपनी के बाहर खराब पार्ट नहीं जाएगा, इसकी जिम्मेदारी QC लेता है. लेकिन QA क्या जिम्मेदारी लेता है? इट इंश्योर्स that right part is manufactured by using right input and right process. Right part is manufactured by using right input and right process. सही तरीके से और सही मटेरियल के साथ, सही इनपुट के साथ, सही मटेरियल के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी कौन लेता है? QA लेता है. So QA is always better.
प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर. हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर. सो क्यूए इज ऑलवेज बेटर देन क्यूसी. सो जैसे हम क्यूए में इम्प्रूव करते जाएंगे, विल able to reduce on QC front. We are able to reduce our inspection, non-value added activities and wastage as well. So QA is nothing but prevention, where QC is nothing but detection. हम पहले से बात कर रहे हैं कि QC डिटेक्शन का काम करते हैं, QA प्रिवेंशन का काम करते हैं. हमें क्या चाहिए? हमें प्रिवेंशन चाहिए, बिकॉज हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग आवर वेस्ट, इट हेल्प्स us in reducing our non-value added activities. Prevention will help us in adding the value to the product, because it will give us a right first time product, so it will add to the value. Quality assurance makes sure you are doing right things right way. Quality assurance क्या करेगा? It will help you to sure that doing right things in a right way. तीसरी बात हमने की थी प्रोसेस ऑडिट के बारे में. प्रोसेस ऑडिट इज नथिंग बट अ प्रोसेस वैलिडेशन. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर प्रोसेस पैरामीटर्स एंड आल्सो ऑप्टिमाइज प्रोसेस पैरामीटर. मतलब क्या है? अगर कोई टेम्परेचर रेंज हमने दिए 1380 लेके 1420 है, कैन वी रिड्यूस द टेम्परेचर डिफरेंस? अगर हम 5 डिग्री भी टेम्परेचर डिफरेंस कम कर सकते हैं, या फिर 1380 से 1420 है, उसको अगर 1380 से 1410 तक लेके आते हैं, मतलब यू कैन एबल टू रिड्यूस 10 डिग्री टेम्परेचर फ्रॉम योर टैपिंग. सो इट विल रिड्यूस योर कॉस्ट, इट विल इम्प्रूव योर प्रॉफिटेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग योर कॉस्ट. तो इस तरह से हम प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या? अपने वेरिएशन को कम कर सकते हैं क्या? प्रोसेस में जो बैंडविड्थ दी है उसको कम कर सकते हैं क्या? इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑडिट. सो इट हेल्प्स यू इन improving process parameter and also improving the optimized process parameters. It helps in keeping watch on various processes being implemented as per decided norms at decided frequency. This helps in maintaining consistency in the quality by putting proper system in place. This is very important tool in achieving consistency in quality. अगर quality में consistency चाहिए तो you have to follow this प्रोसेस ऑडिट. आपको पता चलेगा कि कहीं पे शॉर्टकट हो रहा है, कहीं पे रिसोर्सेस नहीं है, अच्छी तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है. बिकॉज देर आर मेनी एरियाज वेयर वी कैन नॉट एबल टू सी इन डेली बेसिस. हम सभी जगह पे जाके हर चीज़ को नहीं देख पाते. सो देर शुड बी सम system which work periodically, which work on its own periodically to find out abnormalities in the organization. और ये काम करता है हमारा process audit. We must see that the manufacturer inbuilt quality is produced by continuous training at all levels. हमें क्या चाहिए? continuous trainings देनी चाहिए all levels to improve quality awareness. Second, to build up quality culture throughout the organization. एक quality culture develop करना चाहिए. To have sort of फोका योके और मिस्टेक प्रूफिंग वेयर एज पॉसिबल. जहाँ पर भी पॉसिबल है आपको मिस्टेक प्रूफिंग, फोका योके जैसी चीज़ों के कारण आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो, वहाँ पर गलती को अवॉइड कर सकते हो. एंड देन टू मेक प्रोसेस सिस्टम ओरिएंटेड दैन मैन ओरिएंटेड. आपकी प्रोसेस कैसे होनी चाहिए? सिस्टम ओरिएंटेड होनी चाहिए, मैन ओरिएंटेड नहीं है. आज ये आदमी नहीं आया इसलिए वो प्रोडक्शन हम कर नहीं पाएंगे, बिकॉज उस तरह से पूरी कोई कर नहीं सकता है, या फिर उसका कोर सेटिंग यही आदमी कर सकता है. इस तरह की चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए. वी शुड फोकस ऑन मोर ऑन सिस्टम ओरिएंटेड दैन द मैन ओरिएंटेड. आदमी नहीं आया, आदमी चेंज हो गया, आदमी का स्किल नहीं है, ये सारी चीज़ें लेके अगर हम बैठेंगे तो विल नॉट एबल टू गिव अ कंसिस्टेंट क्वालिटी थ्रू आउट द ईयर. और इसी के लिए हमें वी शुड वर्क एज ए सिस्टम ओरिएंटेड रादर दैन वर्किंग एज ए मैन ओरिएंटेड. ये पिक्चर है जिसमें आप देखेंगे कि रिसोर्सेज हमारे पास काफ़ी सारी रिसोर्सेज रहती है, बट वेदर यू आर इम्प्लीमेंटिंग, यू आर यूटिलाइजिंग दोज रिसोर्सेज और नॉट, यू हैव टू सी. हियर द पर्सन इज नॉट यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज प्रॉपरली. ही डोंट नो वेदर ही हैज़ दैट रिसोर्सेज. उसके पास नीचे सीढ़ी का पूरा थैला पड़ा है, लेकिन he is not utilizing it because he don't know he has that resources available with him. So हमें पहले जानकारी होनी चाहिए कि क्या रिसोर्सेज मेरे पास है, and you have to utilize those resources effectively. क्वालिटी और क्वांटिटी हमने पहले ही देखा, फोकस ऑन क्वालिटी देखा. क्वालिटी इज प्रोड्यूस फर्स्ट देन इंस्पेक्टेड. हमने पहले बात की थी कि क्वालिटी पहले क्या होती है? प्रोड्यूस होती है. सो दैट इज वाई द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस डिजाइन इज इंपॉर्टेंट देन इंस्पेक्टेड. सो प्रोडक्शन producing the quality is QA and inspecting quality is QC. So we have to first focus on QA
and whatever left is QC. So focus on QC, the burden on QC will get down. Quality is not an accident, but it is planned activity. We should believe on this word that quality is not an accident. Quality accident के वजह से या ऐसे ही नहीं आती है. We have to plan it properly by designing the proper process control, proper process design, so that we will get desired quality. So quality is not an accident, but it is a planned activity. We have to believe on that, and that is very important. Quality is integral part of management. Management में quality important है. There is no shortcuts to quality. We have to believe again on this. There is no shortcuts to quality. Quality में कोई shortcuts नहीं है. अगर आप कोई shortcut लेते हैं, then you will going to kill your quality. You are going to hamper your quality. You are going to hamper your business. You are going to hamper your growth. You are going to hamper your business plan. So you have to focus on quality. Use problem as a tool of improvement. Many times whenever customer complaints come, rejection increases, the quality person try to move here and there, he just try to hide himself. But I think that there is a challenge, there is a place for an improvement. आपको कुछ नया करने का, नया सोचने का एक मौका मिलता है जब भी कोई प्रॉब्लम आता है. So you can think in a different way, you can think in a different perspective. So every problem is always asking you for the improvement. It is an opportunity for improvement. जैसे हमने अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना is a very big problem for us. There is a lockdown and we are sitting at home, but we take it as an opportunity to start these webinars. So from the problem, we take it a positive thing that we can start webinars, we can start using this technology and try to give knowledge to the people sitting at home. So this is how use a problem as a tool for improvement. This board you can see quality ice cream. The test tells. Quality himself is telling his test. Quality starts in the boardroom. The top management is very important to have quality awareness in the organization. Unless and until the top management doesn't have that quality awareness, quality will not going to spread in the organization. क्योंकि top management अगर बोलेगा कि वेल्डिंग करके भेज दो या फिर सैलवेज करो या डेविएशन ले लो, then everybody will talk in the same direction, everybody talk in the same language. So he has to be very, very strict on quality. He should be quality aware. He should take quality as a challenge. So quality starts in the boardroom. Quality department and top management is responsible to see that the product meets customer specific requirement. हमने already बात की requirement और satisfaction की. So we have finished it. Achieving the overall quality approach in the mindset of the organization is the main role and responsibility of quality head and top management. तो मैंने पहले ही बताया कि quality head की जिम्मेदारी है, लेकिन it is an overall responsibility of all organization. But he should lead as a top most person in the organization. As a quality head, he should take the lead and take that responsibility to take the whole team along with him. So he is a very important person. He should be quality conscious, quality aware person, and he should take the whole team along with him. So another picture, quality policy. If we do not have a quality, we do not have the sales, and then you do not have a job. अगर हमारे पास quality नहीं रहेगी तो क्या होगा? We will not have a business. We don't have a sale, and if you don't have a sale, then maybe you do not have a job. We will become a jobless. So that is why quality is very important. Unless and until we maintain quality, it is very difficult. We'll go to cost of poor quality, rejection, cost of rejection. You'll see all these slides yesterday also. Good work and bad work, the impact of rejection, cost is less, profit will be high, cost will be high, profit will be low. Higher is the rejection, rework, the more is the cost and less will be the profit. इसमें क्या क्या होता है? एक तो कॉस्टिंग कॉस्ट जाती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन जाता है, और हाउ रिजेक्शन अफेक्ट्स यू इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट. आपके कॉस्टिंग कॉस्ट जाती है, ट्रांसपोर्टेशन जाता है, लॉस ऑफ बोरिंग, customer dissatisfaction, customer visit, cost of segregation and rework. All these things are the wastages. So we will take a break again
for 2 minutes and we'll come back because there are 3 or 4 more slides and I think it will get disconnected in next 2-3 minutes. So